सो गाइज आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों ने फॉर्म कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस के बारे में सुना भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी देन यू वुड नॉट बी एबल टू अचीव अ हायर बैंड स्कोर इन आईएलटीएस लिसनिंग सेक्शन। एंड गाइज आई कैन अश्योर यू कि ये वीडियो देखने के बाद आपको फॉर्म कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस पे और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। So in this video guys, I am going to teach you how to solve form completion questions in IELTS listening section. So what we are going to do specifically in this video is, firstly I am going to explain the task to you, then I am going to take you through some simple guided practice, and at the end of this video I am also going to give you some time for doing some solo practice as well. So starting with the task explanation guys. तो दोस्तों, आपको अपने एग्जाम में फॉर्म कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे। एंड दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, जो कि इस केस में हमारी है राइट वन वर्ड एंड स्लैश और अ नंबर फॉर ईच आंसर। मतलब कि दोस्तों, आप हर एक आंसर में सिर्फ एक वर्ड या फिर एक नंबर लिख सकते हो। अगर आपने किसी भी आंसर में 2 वर्ड्स या फिर 3 वर्ड्स लिख दिए देन योर आंसर वुड बी कंसीडर्ड इनकरेक्ट। एंड दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में हमेशा एक एग्जाम्पल दिया होगा, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है मीटिंग डेट 16 जून। आपको भी अपने एग्जाम में ऐसे ही एक एग्जाम्पल मिलेगा एंड उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, आपको बेसिकली करना क्या है, आपको अपनी ऑडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है एंड उसके भी हाफ पे इन सारे ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। तो दोस्तों, ये करते कैसे हैं, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1 गाइज। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है एक रोड का नाम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डैश रोड। तो चलिए दोस्तों, इस रोड का नाम पता लगाने के लिए मैं ऑडियो को प्ले करता हूँ। Good afternoon, A1 Meetings. How can I help? Oh, hello. My name's Cam and I'm calling about hiring a meeting room. Certainly. Let's just check that your date is available before we go any further. When did you want to hire the room? For July. June the 16th. Right. We've got plenty available then. Excellent. Now, we're a local business and we're planning to just walk from our office to your venue on the day. So, can I just confirm the location with you? Yes, of course. We are level 50 Yes? in the Macquarie building. Oh, isn't that on Green Road by the lake? That's quite a distance from us. No, that's the old Macquarie building. Now we are in the city centre. It's level 16B, Gembro Road, Portsville. Oh, would you mind spelling that for me? Certainly. It's GEMBOROUGH Road. सो गाइज आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख दिया होगा ग्रीन रोड। लेकिन दोस्तों, ग्रीन रोड सिर्फ एक डिस्ट्रैक्टर था, वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमारी फीमेल स्पीकर ने बाद में बता दिया था कि उनका ऑफिस ग्रीन रोड पे पहले था एंड अब उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज कर ली है और अब उनका नया ऑफिस है जेम्ब्रो रोड पे। तो इसलिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है जेम्ब्रो रोड। और दोस्तों, इन टाइप्स के क्वेश्चंस में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपको आपकी ऑडियो में किसी वर्ड की स्पेलिंग बताई जा रही हो तो आपको समझ लेना है कि आपका आंसर वही है। जैसे कि इस केस में भी दोस्तों हमें जेम्ब्रो की स्पेलिंग बताई गई थी। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 गाइज। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है नेक्स्ट टू द डैश। मतलब कि दोस्तों, इसमें हमसे कोई लैंडमार्क पूछा गया है जिसके पास मैक्वेरी बिल्डिंग हो। तो दोस्तों, ये लैंडमार्क क्या है, चलिए इसका पता लगाने के लिए मैं ऑडियो को प्ले करता हूँ। Okay, thanks. Sorry, I'm new to the area. No problem. It's easy to find us. We're just beside the cinema, about 2 blocks from the State Library. Got it. Okay, I know the spot. That's perfect. It's an easy walk from our office. Great. तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इजीली मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारा सिनेमा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमारी फीमेल स्पीकर ने कहा था इट्स इजी टू फाइंड अस, वी आर जस्ट बिसाइड द सिनेमा। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 गाइज। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ गवर्नर रूम। तो दोस्तों, गवर्नर रूम की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, चलिए इसको ढूंढने के लिए मैं ऑडियो प्ले करता हूँ। So let me run through a couple of options and we'll work out the best one for your needs. Perfect. So I presume you need space for more than 10 people, right? Yes, probably around 30. Okay, well, there are 2 rooms that would probably suit you. One is the governor room, our most popular option actually. Okay, and how many can it hold? Well, we just had a meeting yesterday with 15 people, but it usually has around 25. We just can't have more than 35 people in there. तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इसमें हमारी ऑडियो में 2 डिस्ट्रैक्टर्स थे। क्योंकि हमारी फीमेल स्पीकर ने पहले कहा कि इस रूम में कल ही मीटिंग हुई है ऑफ 15 पीपल
एंड उसके बाद दोस्तों हमारी फीमेल स्पीकर ने कहा कि यूजुअली इस रूम में मीटिंग होती है ऑफ अबाउट 25 पीपल। लेकिन दोस्तों अगर आपने ऑडियो को ध्यान से सुना हो तो लास्ट में हमारी फीमेल स्पीकर ने कहा है कि वी कांट हैव मोर देन 35 पीपल इन दिस रूम। मतलब कि दोस्तों इस रूम की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो जाती है? इस रूम की मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाती है 35 पीपल। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 गाइज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे स्टेट रूम की फैसिलिटीज़ के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों स्टेट रूम की 2 फैसिलिटीज़ हमें ऑलरेडी मेंशन्ड है, प्राइवेट बाथरूम और इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड। एंड थर्ड मिसिंग फैसिलिटी हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों ये थर्ड फैसिलिटी क्या है? चलिए इसको ढूंढने के लिए मैं ऑडियो प्ले करता हूँ। Well, that sounds fine. Does it have all the usual things? Wi-Fi, projector? Yes, and it's also equipped with its own coffee machine, which is probably why it's so popular. And the price? That one is $445 for the day. Okay, and you said there was another one? There's also a stateroom, another good option for you, but the maximum capacity is 30, so we might need to check your final numbers before locking that one in. Yes. This one has its own restroom attached as well as a kitchen, which is quite handy and saves time during breaks. That's a good point. Oh, and an interactive whiteboard too, if you need that. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा काफ़ी इजी था। आई एम श्योर आप सबको इसका आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है दोस्तों हमारा किचन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे स्टेट रूम की कॉस्ट के बारे में पूछा गया है। मतलब कि दोस्तों हमें ऑडियो में कोई अमाउंट बताया जाएगा। तो दोस्तों ये अमाउंट क्या है? चलिए इसको ढूंढने के लिए मैं ऑडियो को प्ले करता हूँ। Right, and is it more expensive than the first room? The stateroom is $415. Quite a good deal, actually. It is. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा काफ़ी इजी था। आई एम श्योर आप सबको इसका आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारा $415। सो नाउ इट्स योर टर्न गाइज। आई वांट यू टू ट्राई टू फाइंड द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ऑन योर ओन। तो दोस्तों अब आप वीडियो को पॉज करके एक बार इन सारे क्वेश्चंस को रीड कर लो एंड देन आई विल प्ले द ऑडियो। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। Now, prior to your event, we just need a few details from you. The best way to do this is to complete your confirmation via our booking form online. I'll send you the link for that. That'd be great. And then just the day before, our manager will give you a ring to sort out keys. We usually leave them in our lockbox so that you can come and go as you please during the day, and you just return them at the end. Okay then. Now, what else? Once your meeting is over, we do ask that you ensure the table has been wiped down thoroughly. Oh, of course. Our cleaners will take care of the bathroom and kitchen, but any rubbish left behind also needs to be taken out. There's a bin around the back that we'll show you on the day. Alright, that'll be fine. Any laptop or TV cables you use can also just be brought back to the reception on the ground floor. Okay, got it. So let me run this by my manager and then I'll give you a call and... Actually, I'm going to be away from tomorrow, but I'll give you my colleague's number. She'll be able to answer any questions you have. Her name is Jenny Arja, that's ARJAH, and her number is 023-1922. Thank you so much for all your information. So how did you go? Did you find all the answers? Let's check together. सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 6 गाइज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर है कीज। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों हमारा आंसर है टेबल। एंड क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है रबिश। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रिसेप्शन। एंड हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आरजा। सो हाउ मेनी ऑफ दीज डिड यू गेट राइट? टेल मी इन द कमेंट्स। So that was it for today guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.